जिसाय अध्याय 64। आहा, अन्य देशीय माने जेपरी तुम्भ साक्षातरे कंपमान हेबे, एथिपाई तुम्भ विपक्ष गणकु तुम्भ नाम ज्ञात कराइबा निमंते अग्नि झाटी जलाइबा परी, अग्नि जल फुटाइबा परी, जेबे तुम्भे आकाशमंडल विदीर्ण करी ओह्लाई आसंत ओ पर्वतगण तुम्भ साक्षातरे प्रवाहित हुअन्ते, जेतेबेले तुम्हे आममानंकर अनपेक्षित भयानक क्रिया करल, सेतेबेले तुम्हे ओह्लाई आसिल। पर्वतगण तुम्भ साक्षातरे प्रवाहित हेले, कारण जे आपणा अपेक्षाकारी पक्षरे कार्य साधन करती। लोके प्राचीन कालरू तुम्भ छड़ा अन्य परमेश्वर विषय शुणी नाहांती, अथवा कर्ण ज्ञात होई नाही, किबा चक्षु देखी नाही। जो लोक आनंदरे धर्माचरण करे, जो माने तुम्भ पथरे तुम्भकु स्मरण करती, तुम्हे सेमानंको सहित साक्षात करिथाओ। देख, तुम्हे क्रुद्ध थिल ओ आम्हे माने पाप कलु, आम्हे माने दीर्घ काल तहिरे रहिअछु, आम्हे माने कि परित्राण पाइबा? कारण आम्हे समस्ते असुचि लोकतुल्य होइअछु ओ आम्भमानंकर धर्म कर्म सबु असुचि वस्त्र तुल्य अटे, ओ आम्भे समस्ते पत्र तुल्य जीर्ण हेउअछु, आउ आम्भमानंकर अपराध सबु वायु परी आम्भमानंकु उड़ाई निए। पुणी जे तुम्ह नामरे प्रार्थना करे, जे तुम्हकु धरिबा पाई आपणाकु उत्तेजित करे, एपरी केही नाही। कारण तुम्हे आम्भमानंकठारु आपणा मुख लुचाई अछ ओ आम्भमानंकर अपराध द्वारा आम्भमानंकु क्षय करिअछ। मात्र एबे हे सदाप्रभु, तुम्हे आम्भमानंकर पिता अट, आमे माने मृत्तिका, तुम्हे आम्भमानंकर कुंभकार, पुणी आम्भे समस्ते तुम्भर हस्तकृत कर्म। हे सदाप्रभु, अत्यंत क्रुद्ध हुओ नाही, किबा चिरकाल अपराध मनरे रख नाही। आम्भे माने विनती करू, देख, दृष्टि कर, आम्भे समस्ते तुम्हर लोक, तुम्हर पवित्र नगर सबु प्रांतर होइअछि, सियोन प्रांतर होइअछि, जेरुसालेम ध्वंस स्थान होइअछि। आम्भमानंकर पितृलोक माने जेउ स्थानरे तुम्हर प्रशंसा कले, आम्भमानंकर सही पवित्र ओ सुंदर गृह अग्निरे दग्ध होइअछि ओ आम्भमानंकर मनोरम्य विषय सबु उच्छिन्न होइअछि। हे सदाप्रभु, ए सबु हेले हे तुम्हे कि आपणाकु क्षांत करी रखिब? तुम्हे कि तुनी होई रही आम्भमानंकु अत्यंत क्लेश देब?